Hello students, today we have discussed the various parts of the flower, development of the anther, and now we have to discuss the structure of the microsporangium. The structure of the microsporangium, when the microsporangium which is present in the young anther, that can have the four parts, that is divided into four parts: epidermis, endothelium, middle layer and tapetum. The outermost layer of this microsporangium is known as epidermis. It is followed by large-sized fibrous layer of cells which is known as the endothelium. Endothelium is followed by 1 to 3 layers of cells which is known as the middle layer. All of these are structures, they are the protective in functions. सारे के सारे जो हैं वो protective हैं. And then this middle layer is followed by tapetum. This is the most important layer. The cells of the tapetum layers can have the dense protoplasm, and they are of large sized and have the multinucleate. The number of nucleus is more than one in the layer of this tapetum, and this layer is nutritive in its function. ये layer जो है nutritive है इसके function में. It means it provide nutrition to the developing pollen grain. जो इसके बीच में पोलन ग्रेन बनेंगे उसको जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी. By the cells of the tapetum can have the very important quality that they become immovite during the time when they provide the nutrition to the developing microspore cells. Developing pollen grain cells, they become amivite. They become amivite, or either by the process of diffusion they provide nutrition to the developing pollen grain. And the cells which is present in the center of this microsporangium, they are known as archisporial cells. They are known as archisporial cells. These archisporial cells, they become loosely arranged due to the growth of the anther. Due to the growth of the anther, जब anther की जो है वो further growth होगी तो ये cells के बीच में जो है वो अपने आप gap जो है वो बन जाएगा. And some of the archisporial cells, कुछ एक आर्चिस्पोरियल सेल्स जो होंगे दे आर ऑब्जॉर्ब्ड. हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो खा लिए जाते हैं बाय द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर सेल्स. जो माइक्रोस्पोर जो पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं वो उनको जो है वो खा लेगा. इसके कारण भी यहाँ पर गैप जो है वो क्रिएट हो जाता है. नाउ दीज आर्चिस्पोरियल सेल्स दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं दे अंडरगो द मियोसिस. वो कहाँ क्या करते हैं, वो मियोसिस उनके बीच में होता है. एंड आफ्टर द मियोसिस दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड पोलन ग्रेन. ये हैप्लॉइड पोलन ग्रेन जो है वो बनाएंगे. दीज हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स दे आर अरेंज्ड इन दिस पोलन सैक इन टेट्राहेड्रल मैनर. टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जो है वो इनकी होती है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोंजियम. दिस इज ऑल ओवर. कल जो है हम लोग फर्दर इसके बाद जो है वो स्टडी करेंगे. थैंक यू.